दोस्तों आज करने वाला हूँ ये पेंटिंग श्री गणपति बप्पा की। 31 अगस्त को गणपति चतुर्थी है और हमारे यहाँ गणेश जी आने वाले हैं। सोचा उनके आगमन के लिए एक पेंटिंग बनाऊं। हर साल मैं कोशिश करता हूं कि इस सीज़न में मैं गणपति की कोई पेंटिंग बनाऊं। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैं बीमार था और आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। सो वहाँ से लौटने के बाद I was recovering and I thought of making this painting to boost my energy and give me a good feel. So that's the reason I started with this painting और बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है। I personally liked it. So in this video you are going to learn how I made this painting. बहुत easy टेक्निक है, बहुत ज़्यादा कलर्स भी नहीं यूज़ करने वाले हैं। So let's get started. और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक लेके आता हूँ आपके लिए कुछ इस तरह की पेंटिंग ट्यूटोरियल्स जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपको? कैसी लगी ये पेंटिंग? मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, ब्लू थीम में रखा है, बहुत आंखों को अच्छा लग रहा है इस पेंटिंग को देख के। गणपति जी आने वाले हैं 31 अगस्त को, सो मैंने सोचा ये पेंटिंग बनाऊं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये पेंटिंग ट्राई भी कीजिए और गणपति जी का स्वागत कीजिए इस पेंटिंग के साथ। तो सब जने मिलके सेलिब्रेट करेंगे इस सीज़न को, गणपति के फेस्टिवल को। सो विद दैट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप पेंटिंग।